Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel. Mad Educhemistry is specially designed for chemistry and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 12, unit Electrochemistry, NCERT unsolved question number 2.13. Students, read this question very carefully. How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from the molten calcium chloride? And second, 40 gram of aluminium from the molten Al2O3. Al2O3 जो है ना ये aluminium है, alumina. So we'll solve this question step by step. The first question है ना and second question है ना. First पर हमें find out करना है calcium के लिए and second question पर find out करना है for the aluminium. So the electricity required in terms of Faraday to produce a specified amount of the calcium and the aluminium is calculated based on the Faraday's law of electrolysis. The first law, according to the first law of the Faraday, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू. अभी जो क्यू है क्यू इज इक्वल टू आई टी है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड. ठीक है. अभी अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं ना तो यहाँ पर एक कंस्टेंट आ जाता है. अभी ये जो कंस्टेंट है ना ये z है, तो वी कैन राइट दिस इन इक्वल टू z q और z i t. ठीक है. तो ये फर्स्ट लॉ है. अब ये जो z है ना, z को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय n, जहां पर n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. एंड सेकेंड लॉ में ना जो चार्ज है उसको हम इक्वल करना है, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है इसको इक्वल करना है. अगर फ्लो ऑफ करंट इक्वल है ना तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इक्विवेलेंट मास. थ्योरी तो समझ में आ गया. अभी चलो जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यही जो मेन इक्वेशन इसको यूज करना है यहाँ पे. द जनरल फॉर्मूला based on the Faraday law is Faraday's required is equal to mass produced in gram. ठीक है. Divided by equivalent mass gram per equivalent. ठीक है. While equivalent mass is equal to molar mass divided by charge on the ion. तो जैसे मान लो कि Cu2 प्लस, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ना वी कैन से दैट चार्ज ऑफ द आयन. तो यहाँ पर क्या है ना, बेसिकली चेंज इन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बेसिकली -2 इलेक्ट्रॉन है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर चार्ज ऑफ द आयन भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसमें कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है. तो वी विल यूज द फॉलोइंग approximate molar masses मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एटॉमिक मास को अगर समेशन कर दे तो मोलर मास आ जाता है, राइट. तो फर्स्टली जो मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम per mole and molar mass of aluminium 27 gram per mole.
So production of 20 gram of calcium from molten CaCl2 यानी कि calcium chloride. The reduction reaction at the cathode for calcium is Ca2 plus 2 electron Ca. So change in oxidation state is 2. So charge of the ion, charge on the ion equal to 2. Equivalent mass of Ca is equal to 40 gram per mole divided by 2 equivalent per mole. So 20 gram per equivalent. तो अभी ना ये जो वैल्यू है इसको हम जो मेन फॉर्मूला है वहां पर पुट करेंगे. तो फैराडेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फैराडेज required so mass of Ca Faraday is equal to mass of Ca divided by equivalent mass of Ca is equal to 20 gram divided by 20 gram per equivalent is equal to 1 equivalent equal to 1 Faraday. तो फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वही 1 फैराडे. So the electricity required is 1 Faraday. And second case में जो क्वेश्चन था ना प्रोडक्शन, तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टेन Al2O3. तो यहाँ पर रिएक्शन जो कैथोड है ना, यहाँ पर Al से 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन से प्लस 3 ऑक्सीडेशन, तो चेंज इन आयन जो है ना वो 3 है. तो N इक्वल टू 3 एंड इक्विवेलेंट मास Al इज इक्वल टू मोलर मास. तो 40 था, सॉरी 27 ग्राम पर मोल divided by 3 equivalent per mole is equal to 9 gram per equivalent. So Faraday's required is equal to Faraday's required Faraday mass of aluminium divided by equivalent mass of aluminium, equivalent mass of aluminium equal to 40 gram divided by 9 gram for equivalent. यूनिट के ध्यान रखना आपको. तो जो वैल्यू आता है नियर अबाउट 4.44 इक्विवेलेंट. तो इसको राउंड अप अगर करें हम तो 4.45 आ जाता. तो 4.45 फैराडे. तो द इलेक्ट्रिसिटी required is 4.45 फैराडे. ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर इसका. होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कांसेप्ट्स रिलेटेड दिस क्वेश्चन. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक के बाय बाय, टेक केयर फॉर एंड ऑल्सो फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून.
जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।